ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। और अपनी हर एक वीडियो में मैं आज के बाद से एक एक कोट, पॉजिटिव कोट ऐड करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इट विल जस्ट हेल्प अस टू कीप मोटिवेटेड। सो आज का जो कोट है वो कहा है थियोडोर रूजवेल्ट ने, एंड दैट इज़ इफ़ यू बिलीव यू कैन यू आर हाफ वे देयर। सो अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो आधी जीत तो आप यूं ही कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखिए एंड लव योर सेल्फ। सो विद दैट नोट लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सारी की सारी एक अफोर्डेबल मेकअप लुक पे होने वाली है। एंड आई विल बी शेयरिंग मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ मैं सबके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दोज प्रोडक्ट्स। सो या विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो पहली चीज़ है वी हैव टू प्रेप आवर स्किन। सो डोंट माइंड, यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा हुआ है जस्ट टू चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आई जस्ट check in this mirror for some time. So yeah, please just bear that with me. So first thing I would like to add a moisturizer so that the skin is prepped to do the makeup. So I'll be using today this simple brand moisturizer, and this is very good for every skin type, and it's very gentle on skin as well. So I really like this one. So yeah, let's take a generous amount of moisturizer because we don't want our makeup to look cakey or something. So I'll be just putting everywhere. So can you see our skin look plump just with the moisturizer itself? And don't forget your sunscreen. So yeah, I'll just allow a couple of seconds for moisturizer to set in my skin, and after this I'll be using a sunscreen. Here's my sunscreen. I'll be using La Shield sunscreen, and I really like this. This is SPF 50 plus, and it has this PA triple plus as well. And we have to take a generous amount of sunscreen. We should always take at least 2 fingers of sunscreen. That's how much a skin needs actually. We should not just put little bit. So I allow my sunscreen to sit on my skin for some time as well. So yeah, which we'll be using next will be this primer, and this is a very affordable primer I would say, and I really like the texture. This is of brand Insight, and it actually looks very similar the Benefit primer as you can see. So yeah, I'll be using the Insight one to ready to for the makeup. So yeah, so the first step will be the primer. So yeah, we'll be just keeping, it's like a silicone based primer, very, and it does actually pretty good job. As you can see it blurs out my pore very nicely. So yeah, I like this one, and it's very today because I'm just doing a light makeup. I don't want a heavy base, और मुझे बहुत एक light something चाहिए जो कि मेरे little coverage दे. So for that coverage I'll be using a BB and a CC cream. For today I'll just mix these two and apply, and I'll be just doing it at the back of my hand. तो मैं थोड़ा सा BB cream और थोड़ा सा CC cream लेकर उनको mix करके I'll just use my finger like this, and here I have. Okay, I will avoid my under eye because I'll be using a concealer and I don't want to make it heavy base. With my finger only because this is already a very light coverage thing. I don't want to use any blender or any brush, so I'll be just doing it with my hand only. And whatever is left I'll just put it on my neck. You can see it actually give pretty much coverage, heavy coverage or something. It's a very light coverage, but yeah, I like the finish of it because I want to do very light makeup. तो जब आप light makeup करना चाहते हैं, you don't want कि आपकी skin बहुत ज़्यादा heavy लगे makeup से, तो इसलिए ये BB और CC cream आप use कर सकते हैं. So next up I would like to conceal under my arm
eyes. So I don't have very heavy dark circles, I do have very little one, so I won't be using any color corrector. But if you really want to use any color corrector, I would recommend you this Insight color corrector or concealer palette. So it does have conceal, correct and contour, all of it together in this. So एक ही cute little packaging में आपको सब चीज़ मिल जाएगी. कलर के लिए I'll be using this only. So I'll be using this particular shade. You can see this one. So yeah, I'll be again taking just my fingers. Can you see the difference in these two eyes? Moving ahead with the next product. Okay, so next up I'll be using this NYBay compact. This is not just a compact, it acts as foundation, concealer and compact. So I'll be setting up my concealer and whole face with this compact. And this compact actually is a very creamy consistency of a compact. It's not powderish or something. Yeah, that's all guys. So have you can notice कि इसने कितना अच्छा कवरेज दिया है मेरे फेस पे, and yeah, मुझे बहुत पसंद है. So yeah guys, so we are done with the with our base mostly. ओके सो हमारा ये कॉम्पैक्ट फाउंडेशन ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड वी हैव जस्ट डन विद दिस थिंग. एंड नाउ नेक्स्ट अप आई विल बी मूविंग टू कॉन्टोर, एंड अगेन फॉर कॉन्टोरिंग आई विल बी using this particular Insight palette only, this one, and I'll be using this color for my contouring. So मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करना पसंद नहीं है, so that's why I just keep it very light. Okay, if you want you can always build it up. I'll just use this pulley to brush my and yeah, I'll just leave one finger gap, and then after that I'll start my eyebrows because I don't want them to look artificial. I'll just make a little arc at the top and then at the bottom just to give it more definition, and then I'll just slightly fill it out. You can always decide the length of it if you want. You can just but I would like to keep this just diagonally to my eyes. So yeah, this actually gives more nicer look. So can you see the difference? आप difference देख सकते हैं. As per your hairs, just go for a lighter shade. Up eyes, I'm thinking or to go for a pinkish kind of eyeshadow. So yeah, I have done this one. So एक darker shade है जो मैं अपने ends पे use करूँगी और अपनी crease line पे use करूँगी. So for the middle one, I'll be using this pink color. हाँ, इतना ही हमने रखेंगे अपने आई शेडोज़ को. और for lower eye line, I'll just use the same shade, and I'll be just using it over here. And for my inner right corner, मैंने अपनी eyes पे वो Swiss Beauty का glitter लगाया था inner corners पे. And for my blush, I've actually used this All About lip palette which is from Swiss Beauty, and this is very affordable. बहुत ही ज़्यादा इसमें प्यारे कलर्स मिलते हैं आपको. ये पैलेट जो है ये 01 पैलेट है, और इसके जो शेड्स हैं वो बहुत ईजिली ब्लेंडेबल है. आपको ब्रश या ब्लेंडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड मैंने ये 2 शेड्स मिक्स करके अपना ये ब्लशर बनाया है आज का. और आप भी अगर चाहें तो आप 2 शेड्स ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक शेड भी आप ले सकते हैं जैसे आपको मर्जी हो. नाउ विल जस्ट मूव टू हाईलाइटर. सो टुडे आई वुड गो फॉर दिस हाईलाइटर विच इज़ अ Swiss Beauty highlighter, liquid highlighter. I really like this highlighter. This is so nice, and so today I'll be using this one. So I'll just put little drops, blend it again with my fingers. Can you see it? I hope the camera is capturing. Can you see the glow? And if you're wondering, this is in the shade Light Pink 01.
the makeup fixer which I'll be using today. This is again from the brand Swiss Beauty. This makeup fixer, I have used this lip shade which is a blur lip shade which is Call Me Daddy, and this is in the shade 01, and this is a very nude brown shade which I have used. And yeah, so this is the final look which I have created. होप आपको पसंद आया हो, आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल लगे. एंड या जस्ट इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन डिसलाइक इट, एंड इफ़ यू डू लाइक इट देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अगर आपको कोई सजेशंस हैं कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में बता सकते हैं अपने सजेशन. सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट. एंड प्लीज़ जस्ट रिमेंबर, लव योर सेल्फ, कंसिडर योर सेल्फ द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ. आप दिन में कोई भी एक चीज़ ऐसी ज़रूर करिए जो आपको बहुत पसंद है. So okay, thanks for watching and see you next time. Bye.